सो अल्टीमेटली जो मैं उसको दे रहा हूं 5,000 रुपया महीने का एक सब्जेक्ट का 30 मिनट की क्लास का, वो भी मैं इसलिए दे रहा हूं कि ही इज डूइंग गिविंग समथिंग बैक टू मी। सो अपने आप से यह पूछिए कि द पर्पज इज कॉमन, सर्व अदर्स, बट यू नीड टू आस्क व्हाट यू हैव टू सर्व अदर्स। हाउ वुड यू लाइक टू सर्व अदर्स? वुड यू लाइक टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट? Would you like to become a mechanic? Would you like to become a lawyer? Would you like to become a teacher? क्या बनेंगे? But it is all about serving. It's not about making money, because money is not an end. Money is a mean towards an end. Money is just one of the milestones. If you're doing something right, money will come after you. But if you're not doing something right, you will continue running after money and you will never able to grab it. आपने सिर्फ फोकस करना है, whatever you do it to the best and become the best. अब इसकी पीछे पूरी साइकोलॉजी है, टेस्टिफाइड बाय कुरान एंड हदीस, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज नॉट क्रिएटेड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस विद द सेम रिसोर्सेस। और अल्लाह ही जवाब देता है क्योंकि ताकि इस दुनिया का काम चल सके। सारे के तमाम लोगों को रिसोर्सेज बराबर के दिए गए हैं। अल्लाह वुड नेवर लाइक टू डिस्क्रिमिनेट। मां शायद कर जाए डिस्क्रिमिनेट, अल्लाह वुड नेवर डू दो, नेवर एवर डू सो। अब अल्लाह ये कहता है कि रिसोर्सेज इक्वल हैं लेकिन डाइवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अल्लाह हैज डिसाइडेड कि फॉर ईच एंड एवरी न्यू बॉर्न बेबी I will be giving over or handing over a box 1 kilogram worth of resource box, जो दुनिया में आपने काम करने उसके लिए, उसमें क्या है? उसमें प्यार है, उसमें हिम्मत है, ताकत है, एनर्जी है, इल्म है, दानाई है, जो भी है। सो अल्लाह हैज प्री डिटरमिन्ड इट कि ये सबको मैंने देना है। नो, देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, देयर इज अ लाइवलीहुड। और अल्लाह खुद जवाब दे रहा है कि हाँ ऐसा ही है कि किसी के डब्बे में गुलाब जामुन ज्यादा होगा, कोई प्रिविलेज एनवायरनमेंट में पैदा हो गया होगा लेकिन उसकी अकल थोड़ी सी कम होगी, उसको पढ़ना ज्यादा पड़ता होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होगा लेकिन शायद उसका रंग खूबसूरत ना हो, उसका रंग ना अच्छा हो, शायद उसके मां बाप के पास बहुत पैसा ना हो। सो अल्लाह सेज इट इज इक्वल बट इट इज डाइवर्स। From that day onward, it is all up to you to decide what would you like to have in your box. But you can have it. It means that you are created for some very unique purpose. Whatever I have in me, मेरे को स्पेशल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, आग में भी है, और टेस्टिफाई करती है साइकोलॉजी। अब इतनी बड़ी एक सेपरेट सब्जेक्ट है and there are many people who can help you out. हम भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं to help you identifying what were you made for, what is so special about you, what are your strengths and weaknesses, what are your values. जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग हैं एक्सट्रोवर्ट्स हैं, बोलते बहुत हैं, तो साफ है एक्सट्रोवर्जन आपको बता रही है कि दिस इज एन एबिलिटी विच अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज गिवन टू दैट पर्सन। ही इज एक्सट्रोवर्ट, ही लाइक टू बी विद पीपल। आपके घरों में अक्सर लड़ाइयां होती हैं, इसी वजह से होती हैं। अब्बू अगर आपके खामोश तवा हैं, अम्मी हैं आउटगोइंग, तो अब्बू को सारा दिन मुसीबत पड़ी रहती है। इट इज बिकॉज ऑफ आवर शेयर मिसअंडरस्टैंडिंग, शेयर इग्नोरेंस ऑफ द लॉज ऑफ गॉड। जहालत की इंतहा। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने एक दिन सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसी मुआशरे के लिए सबसे बड़ी लानत क्या है? आपने मुस्कुरा के जवाब दिया, जहालत, ignorance. And just look around and you will see that ignorance. मैं जब हार्वर्ड में गया, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो बोर्ड ऊपर लगा हुआ था जहां से एंट्रेंस होती है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की। देयर इज अ सेइंग ऑन दैट, engraved on a stone. It said, if you think education is expensive, try ignorance. अगर लगता है तालीम महंगी है, जरा जहालत आजमा के देखें कितनी महंगी है। और आपके सामने ये मुआशरा जहालत की कितनी कीमत चुका रहा है, आपके सामने है, छुपा हुआ नहीं।
So it is about understanding the basic differences. तो साफ जरा, if somebody is extrovert, if he is an outward going person, तो साफ जरा he should choose a profession aligned with that personal value or personal strength. अब एक इंट्रोवर्ट है जो कि उसका टोटली कॉन्ट्राडिक्शन है, खामोश तबा, उसको आप खड़ा कर दें ऐसे प्रोफेशन में वेर इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग, तो ही विल बी ड्रेन्ड, ही विल बी डूइंग समथिंग विच ही डजंट लाइक. और एक एक्सट्रोवर्ट है जो लोगों को काम करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, उसको आप बजाय इसके कि मार्केटिंग में कस्टमर केयर में रखें, उसको आप कंप्यूटर के ऊपर बैठा दें तो वो तो पागल हो जाएगा. आपके घरों में ऐसी मिसालें रोज आपको नजर आती होंगी कि एक एक्सट्रोवर्ट है, बीमार है. एक्सट्रोवर्ट की बीमारी की 99% रीजन ये है कि वो लोनली है, बीमार है, उसको को होटल चलते हैं, उठ के खड़ा हो जाएगा. Because they get their energy from others. Introvert will get energy from inside. He would like to be alone, and extrovert would like to be with people if they are low. So the different source of energy. एक सिर्फ example दी है, there are hundreds and hundreds of dimensions on which people are different from each other. So मैं बताना ये चाह रहा हूँ, if you are introvert and your dad wants you to become a lawyer, your dad wants you to become a businessman, you might not be very successful. So you have to discover what you are made for, because Allah has created you different. Unless आपने सिर्फ बाद एक फिनोमिना देखा होगा, and the phenomena is that people really get tired of working and they don't really like working. 5 बजे से पहले they start packing up. Oh, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं. Whereas all the successful people, even in Europe, they've been working on average 14 to 16 hours a day. And they've been doing it for the last 20 years. And they never get tired of doing whatever they do. अब आप मुझे ये बताइए, the difference here is what? It's work versus life work. अगर एक काम को काम समझ के करेंगे, then people will get tired because you are doing something against your nature. लेकिन वो शख्स जो काम तरक्की कर रहा है, 14 घंटे काम कर रहा है, वो तो इसलिए कर रहा है कि ही इज नॉट टायर्ड इवन आफ्टर वर्किंग 14 आवर्स. वो घर आके सोता इसलिए नहीं है, वो सीधे सोता कि फटाफट सो गया, सुबह फिर और मैं दफ्तर चला जाऊं. दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ सिंगल डे ऑफ. एंड लुक एट अस, हमसे काम ही नहीं होता. सो इट इज बेसिकली नोइंग द लाइफ वर्क, द सम वर्क विच यू लव टू द एक्सटेंड दैट यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम. अब मैंने एक दफा मैकडॉनल्ड्स के बारे में पढ़ा. इन दोज डेज, राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, व्हेन अमेरिका was becoming an industrialized nation, many people from the agriculture sector, they were forced into the industry में उनको बुला लिया गया. अब अमेरिका में जहां पे 90% पीपल ईट आउटसाइड, 1 घंटे की लंच ब्रेक में पीपल यूज्ड टू कम्यूट टू सिटी सेंटर्स, शहरों में जाया करते थे खाना खाने के लिए. दे यूज्ड टू ऑर्डर देयर फूड्स एंड हाफ ऑफ देम वुड कम बैक हंग्री बिकॉज घंटा खत्म हो जाएगा, उनकी इतनी लंबी लाइन में उनकी बारी नहीं आती थी. वन पर्सन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना एंड ही सेड, Americans deserve a better quality of life. Is there a way that I can give them food quicker and cheaper and fresher? And that was the beginning of a revolution in the food industry, something which was later on called fast food. He never thought कि मैंने तो जनाब अमीर बन